So hey everyone, welcome back to the channel. This is Anushka Saha, and today in this video we are going to deal with the chapter of physics, human eye and the colorful world. Basically the chapter is divided into two parts. First, human eye, where we're gonna deal with the structure of human eye, the defects of human eye and the correction of defects. Then we're gonna move to the next part, that is colorful world. Right? Let us first discuss the structure of eye. First of all, before starting the structure of eye, we should know that what exactly is the human eye. Human eye is the most valuable and sensitive sense organ that all humans have. It enables us to see the various colors and the wonderful world around us. Basically, our eye is comprises of these components, from which these are in our syllabus. Now let us discuss each part. First of all, the human eye is covered from a layer, a transparent layer. It is the uppermost layer of the eye. Since it is the uppermost layer of the eye, so it protects our eye from entering any dust particles. Moreover, it also protects our eye from UV rays, ultraviolet rays. More thing that is to be remembered is that most of the reflection of light is taking place through cornea. मतलब रिफ्लेक्शन हमारे लेंस से तो होता ही है, लेकिन लेंस से पहले ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन ज़्यादा रेस का कॉर्निया पे ही हो जाता है. Now let us move to the next part, pupil. Now what is the pupil? Pupil is the small hole between iris. These are iris, and between iris there is a hole. This hole is the pupil. Now what is the function of pupil? Basically, it is the small hole between the iris through which light enters the eye. It is the entrance of the light. The rays coming out from the object enters through pupil. Okay, then it is the entrance of the eye. Then comes the next part, iris. Now iris is a muscular type, you can say, and basically its function is to control the size of pupil. This is the pupil, and iris controls the size of pupil. Now how it controls? When we move to the brighter area, our pupil gets contract. Now who is responsible for contracting the pupil? Iris, right? Similarly, when we move to the dim light, our pupil gets expanded. Now who is responsible for expanding the pupil? Iris. One more function that you can write in the function of pupil is that it gets contracted in a bright light and it gets dilated means expanded. It gets expanded in dim light, right? You can write the function here also, and in case of iris, you can say that iris controls the size of pupil by contracting it in a bright light and expanding it in dim light. Now let us move to the next part, that is aqueous humor. Now the space between eye lens, this is eye lens, this is eye lens, and this is cornea. Now the space between iris and cornea is filled with a fluid, right? With a fluid, and this fluid is called aqueous humor. It is the watery liquid, okay? Similarly, the space between the eye lens and retina, this is retina, is filled with another jelly-like fluid, which is vitreous humor. Okay, this is vitreous humor. Now the function of vitreous humor is to maintain the shape of eye. Our eye is spherical in nature. To maintain this shape, we have a liquid called vitreous humor. Then comes very important part, lens. Now the lens present in our eye is not made up of glass or plastic. Basically plastic से तो reflection हो ही नहीं सकता. So the lens made up of in our eyes is protein or anything, any other substance. It is called the crystalline lens, and it is the natural lens present in our eyes. And we all know that the main function of the lens is to reflect the rays coming out from any object. Anyway, now let's move to the next part, another important part, that is retina. Now retina is a sensitive membrane, or a delicate membrane, rich of photoreceptors. Now what is photoreceptor? Basically, it is rich of light sensitive cells. What are light sensitive cells? Just like cones and rods.
The main function of cone is to identify color, and the main function of rod is to see the intensity of light, right? Now let's move to the next part. Okay, one more thing, that is the retina is the screen where image is formed. Okay, is the screen where image is formed. Now then comes the optic nerve. Now we all know that the image which is formed on the retina is real and inverted because rays are actually getting meet, right? So since it is real and inverted, that means the object must be seen inverted, but we perceive the object as erect. Now how these things are taking place here is that when the image is formed on the retina, the light sensitive cells get activated, that are means rods and cones get activated, and they transfer signals to the optic nerve, and the optic nerve then carries the signal to the brain, and then brain interprets the image that we perceive. I hope it is clear to you. With this, we have completed with all the parts of the eye. We have discussed the structure of eye. Now let us discuss the defects of eye. Before we move, I just want to let you see that what is iris and what is pupil here. It is called as sclera. Okay, this white portion is sclera, and we all know that in spite of this, we all have the uppermost layer that is called the cornea, and it is the transparent, so you are not getting it here. Anyway, this thing, the hole between iris is pupil. The hair-like structure is eyelid, and this portion which is called iris. Okay, and basically we can see that the color of iris is gray. So we can say that the color of eye is gray. Okay. Okay, then let's move ahead. Okay, so I have mentioned all the function here. You can read it from here. There is another topic, that is blind spot, but it is not in your syllabus. Let me just explain you that it is this spot in the retina where optic nerve connects, and where मतलब basically क्या होता है, इसमें इमेज नहीं बनती है इस पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स ही नहीं होते हैं. इनसेंसिटिव मतलब दे आर लैकिंग लाइट सेंसिटिव सेल्स. Okay. Okay, with this we have completed the structure of eyes. Now let's move to the eye defects. Okay, so the first defects that we are going to deal with is myopia. Now what is myopia? Myopia basically क्या होता है, इसमें पर्सन को पास की चीज़ें तो दिखती है, बट दूर की चीज़ नहीं दिखती है, right? So it is a kind of defect in a human eye where a person is able to see the nearby objects but find difficulty to see the distant objects, right? So here it is definition that a person can see nearby object distinctly but cannot see the distant object. मतलब पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को देख लेता है बट दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, राइट? अब वो पास के ऑब्जेक्ट में मतलब कहाँ तक देख पाते हैं? नियर पॉइंट क्या होता है फॉर अ हेल्दी ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी. अब कैसे कह सकते हैं इन्फिनिटी? क्योंकि हम देखो हम तारे भी देख पाते हैं. वी आर एबल टू सी मून, एंड द मून इज अवे फ्रॉम अस फॉर मेनी किलोमीटर, राइट? दैट्स वाई वी कैन से दैट आवर फार पॉइंट इज इन्फिनिटी. हम इवन सन को भी देख पाते हैं, राइट? तो इतनी दूर जो चीज़ें हम उन्हें देख पा रहे हैं, डेट मीन्स हमारी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है. Okay, now first of all let us see that what is the causes of myopia. That what is the main cause of myopia is excessive curvature of eye lens, right? Excessive curvature of eye lens. These are something that you have to be remember क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? और elongation of eyeball. So we have problems here, and how can we go with the solution? The solution is to apply the concave lens. Remember myopia के केस में हम concave lens का यूज़ करते हैं, concave lens. And what is the nature of the concave lens? It is to diverge the rays, ठीक है? अब क्या होता है for a myopic eye, what exactly happens? The image, मैं पहले पिक्चर बना देती हूँ, just a second. See, myopic eyes में क्या होता है? Suppose this is your eye. This is eye, this is lens, ठीक है? अब मायोपिया के केस में क्या होता है, जो रेज आती है क्योंकि हमें दूर का नहीं दिखता, तो दूर से तो पैरेलल रेज ही आती हैं, तो पैरेलल रेज आती हैं वो विट्रस ह्यूमर में ही मीट हो जाती हैं. अब विट्रस ह्यूमर में तो इमेज नहीं बनेगी ना, इमेज को तो रेटिना पे बनना है, तो इसके लिए हम कौन सा लेंस अप्लाई करते हैं? कॉनकेव लेंस. ना कॉनकेव लेंस अब हमने अप्लाई कर दिया. वी ऑल नो द
नेचर ऑफ कॉन्केव लेंस इज टू डाइवर्स द रेज। नाउ अब जो ऑब्जेक्ट से जो रेज, सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वो लेंस के लिए, ये हमारा लेंस है, क्योंकि कॉन्केव लेंस का नेचर डाइवर्ज होता है तो ये लेंस को थोड़ा डाइवर्जिंग फॉर्म में भेजती है रेज। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, बट अगर आप पेन से या पेंसिल से बनाओगे तो इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो ये जाती है थोड़ी डाइवर्जिंग फॉर्म में रेज को भेजती है। अब लेंस के लिए थोड़ा डाइवर्जिंग को कन्वर्ज करना थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब अब जो रेज कन्वर्ज होंगी वो थोड़ी दूर होंगी, क्योंकि पहले तो रेज पैरेलल आ रही थी। अब लेंस ने क्या करा, कॉन्केव लेंस से और डाइवर्जिंग फॉर्म में भेज दिया। अब डाइवर्जिंग फॉर्म में उसको कन्वर्ज करने में थोड़ा तो लगेगा ना टाइम, तो वो यहाँ कन्वर्ज हो जाती है। इट इज़ इन केस ऑफ मायोपिक आइज। तो यही आपको डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, पहले विट्रेस ह्यूमर पे बनी होती है इमेज, लेकिन कॉन्केव लेंस के बाद इमेज जो है अब रेटिना पे। सिमिलरली अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया में क्या हो रहा था, इन मायोपिया वी आर गेटिंग प्रॉब्लम टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया द थिंग्स आर अपोजिट। इन हाइपरमेट्रोपिया वी आर अनेबल टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स बट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है, द नियर पॉइंट हमारा जो है ना वो दूर चला जाता है, मतलब जो पहले हमारा नियर पॉइंट था 25, वो 25 ही नहीं रहता है, वो और बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉजेज देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया का। फोकल लेंथ ऑफ आई बिकम लार्ज, मतलब फोकल लेंथ गेट इंक्रीज या इंक्रीज इन पावर। ना हाउ वी नो दैट पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो अगर पावर इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया के केस में फोकल लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई तो पावर डिक्रीज हो गई। तो इसका रीजन ये है कि कॉजेज हम ये कह सकते हैं दैट जी डिक्रीज इन द पावर ऑफ लेंस, देयरफॉर इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। ठीक है, दूसरा मायोपिया के केस में क्या होता है, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, इसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, मतलब आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। अच्छा, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द रेमेडी और द करेक्शन ऑफ आई। देखो मायोपिया के केस में वी वर यूजिंग दी कॉन्केव लेंस, एंड इन हाइपरमेट्रोपिया इसमें हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। इसका नेचर होता है कन्वर्जिंग। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करेंगे। सो दिस इज द डायग्राम, यू शुड प्रैक्टिस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके केस में थोड़ा बता दीजिए क्या होता है, जो इमेज होती है वो अवे फ्रॉम दी रेटिना बन जाती है। मतलब अगर ये तो करेक्शन है ना, अगर मैं हाइपरमेट्रोपिक आइज की बात करूँ तो इमेज यहाँ कहीं बनती है। ठीक है, this is the diagram, you should work on it. Now let's move to the next part. Presbyopia. Now it is the condition or it is the defect in which basically it is seen in the old age. ठीक है, ये ओल्ड एज में देखी जाती है, ओल्ड एज। एंड इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दोनों में से ही पर्सन सफर करता है। और कॉजेज क्या है, वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल। देखो क्योंकि ओल्ड एज में देखी जाती है, तो ओल्ड एज जाते जाते हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो वीक हो जाते हैं। तो आई लेंस भी सीलियरी मसल्स भी वीक हो जाता है, राइट। और हमारे आई लेंस जो है उसकी भी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो रेमेडी क्या है, तो यूज बाईफोकल लेंस। ठीक है, इसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, that is power of accommodation. Now what is power of accommodation? It is the ability of eye lens to focus both near and distant objects by adjusting its focal length. देखो हम नियर ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते हैं। देखो डिफेक्ट्स का पहले का टॉपिक है, मैं डिफेक्ट्स की बात पढ़ा रही हूँ, हम इसमें डिफेक्ट्स नहीं जोड़ेंगे। देखो हम एक हेल्थी पर्सन की बात करें, देन वी आर एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम नियर ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, फार ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं। नाउ हाउ एग्जैक्टली वी आर सीइंग दीज ऑल थिंग्स। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, आवर आई लेंस बिकम थिकर। अगेन जब आई लेंस थिक हो गया मतलब पावर बढ़ गई। अगर पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डस द फोकल लेंथ डिक्रीजेस, मतलब क्या हुआ, व्हेन वी सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आवर आई लेंस बिकम थिकर एंड दस decrease in focal length, and this enable us to see the nearby objects. Now in case of far objects, what exactly happens when we are see distant objects, the lens becomes thin and the focal length gets increases, right. The focal length gets increases, thus we are able to see the distant objects. तो यही था power of accommodation या accommodation of power में, कि जो ability है या जो property है आई लेंस की पास वाले और दूर ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करके की जाती है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। now let's move to the next part. अच्छा, before it I will give you the answer of
the formation of image in the eye. What exactly happens? Let me just explain you once. Let us discuss the function of human eye, मतलब the formation of image in the human eye की image कैसे formation करती है. See, suppose this is our eye. What exactly happens? The rays, the light rays, this is object, okay? The light rays coming out from this object get refracted through cornea and lens and forms image on retina. This is retina, this is iris. Now the image formed on the retina, real and inverted. Now the photoreceptors or the light sensitive cells on the retina get activated and transfers the signal in the form of electrical signal to the brain through optic nerve, and the brain interprets the image that we perceive. मतलब brain ही जो है that help us to see, जो real और inverted image थी, जो inverted image थी उसे brain ही सीधा करके देता है. I hope it is clear to you. Now let us move to the next part. Now we have completed. Let me just see the flow chart. Okay. Now we have completed the structure of human eye, the defects of human eye. Now let us move to the next part, that is refraction of light through prism. Now what is prism? Prisma, this is what is prism, and it is made up of three rectangular faces and two triangular faces. Okay. See, one rectangular face, second and third, and this is one triangular face, and behind it also one triangular face. So मतलब two triangular faces and three rectangular faces. Okay, I hope it is clear to you. Let us see the refraction of light through a prism. Now how it exactly takes place. Let us take a prism. Suppose this is a prism. Okay. Now the how reflection is taking place here. First of all, the ray gets strike here. Look at this. Now according to the law of refraction, first of all, what is reflection? We all know that the bending of a light when it comes from one medium to another is called the refraction of light. Now here it is rarer medium and it is denser medium. Denser. तो आपको पता ही होगा, लिखती नहीं हूँ, चलो मैं लिख देती हूँ rarer and here it is denser medium. ठीक है. Now when rays strike on any surface, first of all we have to draw the perpendicular, which is called normal. It would be perpendicular from the, ठीक है, perpendicular ना, जैसे ये देखो ये perpendicular है ना. Now when the light ray move from rarer to denser, it moves towards the normal. तो ये रे क्या जाएगी? Towards the normal. ठीक है, या तो ये रे जानी थी, इस रे को कैसे चाहिए थी? ऐसे. बट क्योंकि ये डेंसर मीडियम है तो ये नॉर्मल की तरफ जाती है. ओके. Now again, now the ray has to move from denser to rarer. So it will move away from the normal. Let me draw the normal. Normal again perpendicular. ये normal 1, normal 2. अब ये रह जाएगी away from the normal. ठीक है, this is what the refraction through prism is meant. ठीक है. Now ये जो रे थी इसे एक्चुअली में ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था, राइट. एंड इसको इस रे को मैं मिलाऊंगा इससे. Now this is what called angle of deviation. This part. Okay, just a second. It is called the angle of deviation. ठीक है. And this is called the angle of prism. Now let us discuss it through a clear diagram. Here it is normal, it is angle of deviation, it is incident ray, it is refracted ray, and that is emergent ray. This angle of prism.
Okay, so I hope it is clear too. This is a very easy diagram. You should try this. Now let us discuss the dispersion of white light by a glass prism. Now this is what we have seen here. Now what is called the dispersion? Now dispersion is the splitting of white light. What happened here? Basically what is happening here? The white light is getting or splitting into several colors, right? 7 colors, basically 7 colors. Okay, so what is dispersion of light? Dispersion of light is the splitting of white color or a white light. White color तो नहीं कह सकते. The dispersion of light is the splitting of white light into its constituent colors. Now what are they? Red. Basically these are get with pure, right? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, the Vibgyor. Here we find it. So here a term comes, that is spectrum. Now what is a spectrum? Spectrum is the band of 7 color. Okay, band of these are called spectrum. Okay, band of 7 color. Now similarly, just like we have drawn this thing, हम उसका भी ऐसे ही बना सकते हैं, refraction और dispersion of light का. ये white light हमने डाली, रिफ्लेक्ट हुई और 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में सबसे पहले ऊपर रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, हम पढ़ेंगे. देन एट द एंड वॉयलेट. ठीक है, इनके बीच में 7 कलर आते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन? The main cause of dispersion is the different wavelength or deviation of light. See, why red light is always the topmost and why violet is always the downmost? The reason behind is that the red light is having the highest wavelength and the violet light or the violet color basically having the lowest wavelength. ठीक है, और जिसका remember it that the light having highest wavelength will always have the lowest angle of deviation. Now angle of deviation क्या था? यही तो, right? तो अगर हम इसकी डेविएशन की बात करें इसके कंपैरिजन में, तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड का कम होगा और वॉयलेट का ज़्यादा होगा. वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन हाईएस्ट होगा और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा. रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगी और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी. होप इट इज़ क्लियर टू यू. ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब वेवलेंथ जो होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेविएशन की. ना वेलोसिटी मतलब क्या? सी जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा दूर तक रहेगी, राइट? वहीं वो कम डेविएट करेगी क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन उसका कम होगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई हैव टॉट यू दैट रेड लाइट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ. ठीक है. Okay, then it was the experiment done by the Isaac Newton. Recombination of white light. What exactly is he doing? That one he placed the prism like this and one in upward face. Right now, this is the white light. The rays get refracted and get dispersed into 7 color. Okay, R refers to red and violet refers to V refers to violet. Then again he found that the ray get again refracted and get the emergent ray that he found is white light. Okay, so that is called the recombination of a white light. Okay, now then comes the rainbow formation, and I would try to teach this topic in the next video in part 2. So this is all for today. Thanks for watching.